हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। वीडियो नंबर 49 की शुरुआत करेंगे आज अपने मॉक टेस्ट सीरीज के। और ये क्वेश्चन बैंक बढ़ता ही जाएगा और आपके बहुत काम आएगा किसी भी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। ये सीरीज मैं आपको बहुत सालों से करवाती आ रही हूँ, 4 to 5 years हो चुके हैं ऑलरेडी, एंड आई वुड लव टू कंटिन्यू इट क्योंकि काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है इस सीरीज के लिए और काफ़ी काम आ रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। न्यू बैचेस फॉर्म किए जा रहे हैं 2026 के एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आप में से जो भी एडमिशन चाहता है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर कॉन्टैक्ट करके क्वेरी कर सकते हैं। आज की वीडियो में 10 क्वेश्चंस होंगे एज यूजुअल, और मुझे अपना स्कोर बताइएगा 10 में से आपको कितने क्वेश्चंस ऑलरेडी आते थे। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन। कैथरीन बर्कले इज अ कैरेक्टर फ्रॉम अर्नेस्ट हेमिंग्वेज फेमस नॉवेल, विच वन इज इट? द करेक्ट आंसर इज फेयरवेल टू द आर्म्स। फीमेल प्रोटैगनिस्ट इन फेयरवेल टू आर्म्स बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे 1929 का वर्क है। द नॉवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ एन अमेरिकन एम्बुलेंस ड्राइवर इन इटली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन एंड रिलेशनशिप विद कैथरीन। जैसे कि मैंने आपको बताया है पिछले कुछ वीडियोस में, मैं राइटर्स के वर्क्स को भी इन्हीं वीडियोस में कवर कर रही हूँ। द सन ऑल्सो राइजेस, फेयरवेल टू आर्म्स, फॉर हुम द बेल टॉल्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, एंड द 1954 Nobel Prize in Literature. These are the major achievements of Ernest Hemingway. 482. Which of the following Eliot's character is different from the rest? Macavity, J. Alfred Prufrock, Sweeney और Bleston? J. Alfred Prufrock की फेमस पोएट्री है द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock, और दिस इज द ओनली कैरेक्टर ऑन द लिस्ट जो कि एक मॉडर्निस्ट कैरेक्टर है, मॉडर्निस्ट पोएट्री का पार्ट है। रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स थोड़े से सरियल और सिंबॉलिक हैं। दिस वन इज अ मॉडर्निस्ट कैरेक्टर। Which of the following plays by G.B. Shaw has been made into a film starring Audrey Hepburn? The correct answer is Pygmalion. Pygmalion जो कि 1938 में मूवी में कन्वर्ट किया गया था। It was a musical, My Fair Lady. अगर आप म्यूजिकल में इंटरेस्ट रखते हैं तो जरूर देखिए इसको। ये हैं जीबी शॉ के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स: विडोवर्स हाउसेस, आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, मैन एंड सुपरमैन, पिग्मेलियन एंड सेंट जून। सेंट जून जिसकी वजह से जीबी शॉ को नोबेल प्राइज भी मिला था। What does Mulkiraj Anand satirize in Coolie? Indians imitating English society and its consequences, nationalism, industrialization or exploitation of poor people? It is D. 1936 का ये वर्क है कूली मुल्कराज आनंद का, बहुत ही पावरफुल क्रिटिक है ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसट्रीटमेंट ऑफ वर्किंग क्लास, पर्टिकुलरली द पुअर इन ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया। इट फॉलोज द स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय जिनका नाम है मन्नू, नाम याद रखिएगा, whose tragic experiences reveal the severe social inequalities. Which one of these is not a novel written by Mulk Raj Anand? Coolie, Heat and Dust, Across the Black Waters, or The Untouchable? Heat and Dust is not a novel by Mulk Raj Anand. The other works, Coolie, Across the Black Waters, Untouchable, are the key novels by Anand which focus on social issues and the plight of the marginalized in the Indian society. Heat and Dust 1975 का एक वर्क है by Ruth Prawar Jawala which won the Booker Prize in 1975 too. मुल्क राज आनंद के वर्क्स देखते हैं। अनटचेबल इनका फर्स्ट नॉवेल था, उसके बाद कूली, टू लीव्स इन अ बड, विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, सॉर्ड एंड द सिकल, सेवन समर्स, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, मॉर्निंग फेस जिसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था 1971 में। His poetry comes out of his reactions to his environment and he juxtaposes old and new by setting peasant superstition against modern skepticism. This is a comment on Ezekiel, Nissim Ezekiel, and one of his particular poems. Which one is it? The correct answer is Night of the Scorpion. बहुत ही well known poetry है by Nissim Ezekiel reflecting his reactions to the environment and traditions of rural India. The poem compares superstitions and skepticism
with a poet describing his mother suffering after being stung by a scorpion. Option D, the right answer. Hamlet was written by Shakespeare. सब जानते हैं. The Hamlet was written by whom? The correct answer is Faulkner. The Hamlet, the novel by William Faulkner, published in 1941-940, the first volume of the trilogy, including और भी इसके पार्ट थे, The Town, जो कि 1957 का था, and The Mansion. This was of 1959. 1957, 1959 and The Hamlet 1940. ये आप याद रखिएगा. Faulkner's Sound and the Fury was published in which year? The correct answer is 1929. It employs several narrative styles including Stream of Consciousness, published in 1929. It was his fourth novel, immediately successful नहीं था but later on got very popular. विलियम फॉकनर के भी कुछ फेमस वर्क्स देख लेते हैं. द साउंड एंड द फ्यूरी, एज आई ले डाइंग, सेंचुरी, लाइट इन ऑगस्ट, एब्सलोम, द हैमलेट, गो डाउन मोजेस एंड 1949 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. ये कुछ चीजें आप नोटिस कर लेंगे तो बहुत से क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे. 1914, First World War begins and Robert Frost published his work. Which one is it? North of Boston. North of Boston is a collection of poems by Robert Frost published just as the First World War began. The collection includes some of his very famous poetries and established his reputation as an American poet. Which of the following novels by Ernest Hemingway deals with his actual disappointing experiences of love and war? The correct answer, A Farewell to Arms. हेमिंगवे का सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी माना जाता है इसको, रिफ्लेक्टिंग हिज ओन एक्सपीरियंसेस एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन एंड हिज डिसअपॉइंटिंग रोमांटिक रिलेशनशिप्स. इट कैप्चर्स द थीम ऑफ लव, थीम ऑफ लॉस एंड थीम ऑफ हॉरर्स ऑफ वॉर. ये सभी हैं वो कोर्सेज जिसके लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. CUET के लिए JMI, IPU और किसी भी यूनिवर्सिटी का मास्टर्स इंग्लिश एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा अगर आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं. UGC नेट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JPSC के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JSSC के लिए और बहुत से और IGNOU कोर्सेज के लिए. आई डू प्रोवाइड PDFs एंड इवन लाइव सेशंस. आप क्वेरी कर सकते हैं. लिटरेचर के UPSC एग्जाम के लिए भी आप क्वेरी कर सकते हैं. इन सबकी ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रोवाइड करती हूँ. दिस इज द व्हाट्सएप नंबर जहां पर कॉन्टैक्ट करके आप क्वेरी कर सकते हैं. एंड यू मे ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन दिस टेलीग्राम लिंक.